students, we are on the last exercise of chapter number 11 and this exercise is about punctuation marks. Let's see what is the exercise. Mark the sentence as correct or incorrect. Put a comma to make a sentence correct. कि हमने ये देखना है कि कोई एक सेंटेंस करेक्ट है कि नहीं है और उसको करेक्ट करने के लिए हमने कॉमा को ऐड करना है, यानी पंक्चुएशन की एक्सरसाइज है. लेट रीड द फर्स्ट सेंटेंस हियर दैट बिकॉज आलिया मिस्ड हर स्कूल बस शी वाज लेट फॉर स्कूल. ये सेंटेंस स्टूडेंट्स इनकरेक्ट है. इसको हम इनकरेक्ट सेंटेंस क्यों कहेंगे? क्योंकि यहां पे कॉमा नहीं पड़ा, तो यहां पे कॉमा आएगा बस के बाद. अगर हम कॉमा डालते हैं बिकॉज आलिया मिस्ड हर बस पॉज, क्योंकि आलिया ने अपनी बस मिस की, दैट्स व्हाई शी वाज लेट फॉर स्कूल. अब अगर हम इस बस के साथ कॉमा ऐड करते हैं तो इट विल बी अ करेक्ट सेंटेंस, अदरवाइज ये इनकरेक्ट सेंटेंस है. आफ्टर क्लेम्स कम होम ही विल टेक यू टू द बुक शॉप. अगेन ये इनकरेक्ट सेंटेंस है स्टूडेंट, बिकॉज होम के बाद यहां पे कॉमा होना ज्यादा जरूरी है. The third is the class will have the swimming lesson if the instructor comes tomorrow. Absolutely correct sentence because no punctuation is needed here. When it rains, I'll bring an umbrella to school. Definitely यहाँ पे एक comma आएगा, otherwise it's an incorrect sentence. Although Mr. Asif was sick, he went to work. Absolutely correct sentence और क्योंकि बिल्कुल correct जगह पे comma ऐड हुआ है इसलिए ये हम इसको करेक्ट सेंटेंस कहेंगे. सो स्टूडेंट, दिस वाज लास्ट एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर नंबर 11 नॉइस इन द एनवायरनमेंट. माय नेम इज सरदार हमजा. आई एम योर इंग्लिश इंस्ट्रक्टर फ्रॉम tutoria.pk. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल. वी विल मीट यू इन द वेरी लास्ट चैप्टर ऑफ ग्रेड 9th बुक in upcoming video.